Good morning, guys. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Thank you. Is the screen visible, everyone? Yes, 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 yes. You are audible. Okay. Today, everyone. Yes. Okay. Can we start? Today, I'm going to start with a simple chapter. Please mute yourself. Can we start? Because I'm getting my own voice repeated. Today, I'm going to start with a simple chapter. Please mute yourself. मुझे अपनी आवाज बहुत बार बार सुननी पड़ रही है because I'm getting my own voice repeated. मुझे अपनी आवाज बहुत बार बार Hello, can you hear me, guys? Okay, let's start. I will be starting with a simple chapter called percentage. So let's start. Now, what is percentage?
So percent is made up of basically two words. It is a Greek word, and that is per plus cent. So percent, cent is the word. We use it for 100. Okay. So X percent, it means X upon 100, or vice versa. X upon 100 is equal to X percent. Now, if somebody says, I have scored 72% marks, (72 upon 100), that means he has scored 72 marks. Out of that is 72 marks out of 100 marks. That means 72%. Now the same thing goes. Now the same thing goes. Find 48% of 75. How to approach this? It is simply 48% means 48 upon 100 multiplied by 75. 4 za, we have 3 za, and which is equal to 36. Simply we try to find out every. We have find out 110th. Okay. Now let's say we have to find 66.66% of 6,000. Now what is this? Understand, this percentage can be converted into a fraction. That is, a percentage can be converted in can be converted into a fraction. Now see how. Before solving this question, what I will do is I will write how to convert this percentage into a fraction. Now please see. If I have 100%, let's say I have bought a pizza and I am the person who is going to eat it. So I am eating one pizza and it is shared between a person.
So can I say 1 by 1 is my 100%? When I write 50%, it is 1 pizza divided between 2 people. Similarly, when I write 1 by 3, that means 100% of pizza divided into 3. So this is 33.33%. So when we write a pizza divided by 4, that means each person is getting how much? 25%. 1 pizza divided by 5, each person is getting how much? 20%. 1 pizza divided by 6, it is 16.66%. Isn't it, guys? So similarly, 1 by 7 means 14.28%. 1 by 8 means 12.5%. 1 by 9 means 11.11%. Now, always understand, you have to say after the decimal each digit separately. As for we have 16.66, we have 33.33, we have 14.28%. Always remember it. And then we have 1 by 10, and 1 by 10 means 10%. 1 by 10 means 10%. Is it clear? Please make sure of one thing. And in the last question, we took find 66.66% of 6,000. Find 66.66% of 6,000. And what it means? It means when we write 1 by 3 as 33.33%, you double both the sides. What will it become? It will become 2 by 3, and which is equal to 66.66%. So this can be written as 2 by 3 multiplied by 6,000. So this is giving me a 4,000. Is it clear, guys? Let's go to another question. Find 40% of a number whose 75% is 80. What it means? 75% of that number is 80. 75% of that number is 80. So 40% of that number will be what? Isn't it? A cross multiply. And a cross multiply means 40 into 80 by 75. So what it will be? 5 16s, 5 15s, 5 3s, 5 8s. 16 8s 128 by 3, and that means 3 4s 12, 3 2s 6, 42.66.
isn't it? Now see, let's say I will take a number, a question as a man spends 30% of 30% of his salary on food, 20% on rent, another 15% on clothes, and saves 900. And the question says, find his salary. Now, understand, he is spending 30% of his salary, again 20% of his salary, and 50% of his salary. So how much is he spending? He is spending 30% plus 20% plus 15%. Now, every time you will notice here is the whole salary, part of whole salary is spending. So this becomes how much? 30 plus 20 plus 15, and that is 65%. He is spending 65%, and it means he is saving how much? 35%. So this 35% is equivalent to what? His saving. So 35% is equivalent to 900. It means 100% is equivalent to how much? Again, cross multiply, because this is a question of direct variation. And when there is a question of direct variation, it means what? It means you can cross multiply it, isn't it? You must have already learned about it. So let's do it. And that is 900 multiplied by 100 divided by 35. So 5 7 ja 5 20 ja, so it becomes 18,000 divided by 7, and your answer will be 7 2 ja 14, 4 0 40, 7 5 ja 35, 5 is the remaining, 5 0 50. So 7 ja 1 ja 0.4. So it is 2571.4. 2571.4. Is it clear? Okay. Now, same question, but with a variation. Now let's see it. A man spends 30% salary, 20% rent.
and 15% on clothes. Spends 30% of salary on food, 20% of remaining on rent, and 15% of rest on clothes. If his saving is 900, find his salary. Now see, here, if he is saving, if he is spending 30%, let's solve it by another method. 100, I am considering 100 as his salary. I am considering 100 as his salary. If he is spending 30%, that means he is spending 30 rupees. His remaining will be 70. Now again, 20% is his rent, that is 14 rupees, and his remaining will be 56. So if his, again, spending 15% on the clothes, that means 10% is what? 5 rupees 60 paisa. So how much is 15%? Again, 2 rupees 80 paisa. So what it will be? 5 rupees 60 paisa and 2 rupees 80 paisa. How much? 8 rupees and 40 paisa. Isn't it? So 8.4 is his spending. So how much is he saving now? That is 56 minus, you say, 10 and 46, 1.6 added, it is 47.6. So he is saving, out of 100, he is saving 47 rupees 60 paisa, but his saving is how much? 900. So his salary will be how much? And we will calculate by cross multiplying, and that is 100 into 900 divided by 47.6. Let's take it like this, and what we will get is, let's cancel it out, and it will be 900 into 1000 divided by 476. 900 into 1000 divided by 476, and how much we will get? Let's cancel it out. 4 times 1, 4 1 is 4, 119. 4 times 1000 will go how much? 250. And let's cancel it now. So it will be approximately 2 times 238, 12 decimal 120, 2.1. So 900 into 2.1 is how much? Anyone?
It will be 1890 approximately, isn't it? Now see, a most peculiar question will be asked in percentage, and that is, a student fails by 7 marks, fails by 7 marks. If the pass mark, just hold on, if the pass mark is 80, which is 40% of, which is 40% of total mark, how much percent did he score? So understand, a student fails by 7 marks, pass mark is 80, so he scored how much? He scored 80 minus 7, and that is 73. Clear? Now understand, 40% of the marks, 40% of the total marks is your 80. So 73 marks will be how much? And that is cross multiply. So 73 into 40 divided by 80. 42s are, and how much we get is 2 3s are 7, that is 36.5%. How much he scored? And he scored 36.5%. Is it clear? Let's go to a question of increase and decrease. Please see. Price of petrol increased by 20%. A student does not wishes to increase his budget over petrol. How much less percent of petrol he will get? How much less percent of petrol he will get? Now this is your question. It is very easy to solve.
Now let's see it. How? Suppose the old price of petrol was 100 rupees per liter. So the price has increased, and increased by how much? 20%. So what is the new price now? Rupees 120 per liter, isn't it? Now he doesn't wishes to increase his budget over petrol. So what he will do? We all have a habit of buying for 100 rupees. So the same the student will do. He will buy petrol of how much? Rupees 100. So what he will get? He will get, उसको 20 रुपए की पेट्रोल कम मिलेगी, है ना? 100 रुपए से अगर वो खरीदता है 100 रुपए की, तो 20 रुपए की पेट्रोल कम मिलेगी. New rate, what it is? 120. And let's cancel it. It is 1 by 6. Earlier I have given you. See here, 1 by 6 is how much? It is 16.66%, isn't it? Now see, I have given you here 1 by 6. How much it is? Please go see for yourself. 1 by 6, how much it is? 1 by 6 is 16.66%, isn't it? So how much petrol he will get less in percentage? That will be 16.66%. Now these type of question you can solve it very easily. Now see, we just have to say the price is increased by, let's say, 10%. For increase I am using up arrow. The price is increased by 10%. Let's say by 20% we have already done, but we will do it once more. 25%, and we will use 30%. यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 100 रुपए की चीज मिलेगी कितने में? ये आपका ओल्ड प्राइस, ये आपका न्यू प्राइस. आपको मिलेगी 110 में. कितने का कम मिलेगा? अगर वो 100 रुपए का खरीदता है तो ओल्ड प्राइस की वैल्यू से 10 रुपए का कम मिलेगा. किस पे? 110. And what it is? It is 1 by 11. 1 by 11 is what? 9.09%. Similarly, let's see. ₹100 का पेट्रोल प्राइस बढ़ा कितने से? 120 से. हम लोगों ने अभी देखा है 20 रुपए का पेट्रोल कम मिलेगा अगर 100 रुपए का लेता है और 120 की रेट से. What it becomes? It becomes 1 by 6, and 1 by 6 is equal to 16.66%. 25%, यानी 100 रुपए की पेट्रोल कितने में मिल रही है अभी? 125 में. उसको कितने का पेट्रोल कम मिलेगा? 25 रुपए का. किस रेट से? 125. What it is? 1 by 5. And 1 by 5 is how much? It is 20%. Similarly, 30%, यानी 100 रुपए की चीज कितने में मिलेगी? 130 में. वो अभी भी 100 रुपए का खरीदेगा. 100 रुपए का खरीदेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि he will get 30 रुपए का पेट्रोल कम मिलेगा. On the rate 130. Now 3 by 30. What will be 3 by 30? ध्यान से देखिए, 1 by 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.69% में. 3 by 13 लाने के लिए क्या करना होगा? आपको दोनों ही तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्या हो जाएगा ये? तो देखें आप, 7.69 into 3 आप करते हैं तो ये आपको हो जाता है 23.07%. तो आप देखें यहाँ पे, just you have to think of like this way, कि 10% अगर प्राइस
आपकी इंक्रीज हुई, 10% अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हुई, यानी यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस। ध्यान से देखें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। 10% यानी 1/10 से अगर प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो यहाँ पे डिक्रीज कितने से हुई? 1/11 से, है ना। 1/5 से आपकी प्राइस अगर इंक्रीज हुई फ्रैक्शन में तो आपका यहाँ पे क्या हुआ? 1/6 से डिक्रीज हुआ, आपको कम पेट्रोल मिल रहा है। 25% is what? 1/4, isn't it, guys? Hello? 25% is what? 1/4. 1/4 से प्राइस इंक्रीज हुई, यहाँ पे क्या हुआ? 1/5. 1/5 से डिक्रीज हुई। Similarly, 30%. 30% means what? 30% is your 3/10. 3/10 से प्राइस इंक्रीज हुई तो यहाँ पे आपका डिक्रीज क्या हुआ? 3/13. इसी चीज को आप थोड़ा गौर करें तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई प्राइस इंक्रीज होती है P/Q से फ्रैक्शन में, तो प्राइस यानी कमोडिटी जो कम मिलेगी वो कितनी मिलेगी? P/P प्लस Q से, P/P प्लस Q से। डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर आप फ्रैक्शन में आगे उसको बढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 तक दिया है, आप उसको आगे भी बढ़ाएं 1/20 तक, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आसान लगने लगेगा। यू जस्ट सी द क्वेश्चन। किसी ने आपको बोला कि प्राइस 40% से इंक्रीज कीजिए, तो 40% को क्या लिखते हैं हम? 4/10। 40% 4/10 मीन्स क्या हो जाएगा? आपका 2/5, इजंट इट? तो 2/5 से इंक्रीज मीन्स आपका डिक्रीज कितना होगा? 2/7 से। आप जानते हो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है आपको? 14.28%। तो 1/7 की वैल्यू आपको 14.28% होती है, इजंट इट? अगर कोई आपको कहता है यहाँ पे कि 40% से प्राइस आपकी इंक्रीज होगी, तो 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100। आप इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2/5, ये आपका हो जाएगा 2/5। तो 2/5 से प्राइस इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीज होना चाहिए इसको 2/7 से। आप जानते हो क्या? 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%। 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंड दैट विल बी 28.56%। दैट इज डबल ऑफ 14.28। ये आपका 28.56% हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से परसेंटेज का इस्तेमाल आपको क्वेश्चन में होगा कुछ इस तरह से: पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज। ध्यान से देखें, क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह का है कि एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है। 10,000 है। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। इंक्रीज के लिए मैं यूज कर रहा हूं अप एरो, ओके, एंड अ प्लस साइन। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 10%। सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन डिक्रीज होता है 20% से, और अगेन थर्ड ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 25% से। तो आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी? आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी? अब इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्या है? अगर 10,000 आपकी पॉपुलेशन है, 10% इंक्रीज हुई मींस क्या हो गया?
100 का 110 हो गया, 110% मीन्स 110/100। दूसरे साल 20% डिक्रीज हुई, यानी 100 का 80 हो गया, तो 80% मीन्स 80/100। और 25% इंक्रीज हुआ, मीन्स क्या हुआ, 125%, यानी 125/100। लेट्स सॉल्व इट। वी हैव 1 cancelled, 1 and again cancelled, 1 2, we have cancellation here, 1 2, and then we have 1 0, again 1 and 0, so all the zeros are cancelled. आपके पास बचा कितना, 125 into 8 into 11. 125 into 8 is 1000 and 1000 into 11 is how much, 11,000। आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, 11,000 हुई। इसी चीज को मैं आपको एक और मेथड से भी दिखाता हूं, एंड दैट इज, आप थोड़ा गौर करें, इसी चीज को मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं, एंड अब थोड़ा यहाँ पे गौर करें। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पेज। ध्यान से देखिए, 10,000 की पॉपुलेशन इंक्रीज कितने से हुई, 10% से, यानी 10,000 का 10% हाउ मच, 1,000। अभी पॉपुलेशन क्या हुई, 11,000। फिर 20% से डिक्रीज हुई, इजंट इट। इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% विल बी 1100, तो 20% विल बी 2200। सो 11,000 में से आप 2200 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, 8800। अब आपकी इंक्रीज हुई कितनी, 25% से। 25% से इंक्रीज हुई मीन्स कितना, तो आप देखें 10% 880 और 1/4 दैट इज अगेन आपकी 2200 से इंक्रीज हुई। ये आपका क्या हो जाएगा, वापस से ये 11,000 पे आ जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट, इज इट क्लियर गाइस? Now see, next question. Our next question is, based on appreciation and depreciation. Now what is appreciation and depreciation? ध्यान दीजिएगा प्लीज। Let's say price of a machinery depreciates every year by 10%. If current price is, let's say 10,000, what was the price 2 years before? What was the price 2 years before? एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि what was the price 2 years before, और एक दूसरा क्वेश्चन इसमें अटैच हम कर रहे हैं कि what will be the price
after 2 years, what will be the price after 2 years and what was the price 2 years before? अगर आज का 10,000 प्राइस है तो इस चीज को आप देखें। सबसे पहले मैं 2 years बिफोर वाला आपको सॉल्व करके देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि 2 साल पहले उसकी प्राइस x थी, 10% से घटी मीन्स 90% हुई। अगले साल भी उस वैल्यू का 90% हुआ और ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 10,000 into 100 into 100 divided by 90 into 90. Cancel it out. Clear? So this is 10,000 into 100 divided by 81. So 10,000 into 100 divided by 81. Again, यहाँ पे अगर आप देखें 10,000 divided by 81 अगर आप देखते हैं तो प्लीज इसको खींचिए। 81 से 100 1 टाइम्स कितना आएगा? आपका आएगा 19। डेसिमल डालिएगा 190। 81 2s are how much? 162. So 190 minus 162, it will be how much? 22. 28. Isn't it? So your answer will be 1.23 approximately, isn't it? And what we will do is multiply this by 10,000. So multiply this by 10,000. Approximately the value will be 12300. 12300. Okay. So 2 डेसिमल तक मैंने इसको सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ोगे लेट्स से तो ये आपका हो जाएगा 1.23 से 4, so it will be 1 2 3 4 something. Okay, so approximately और आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। Now 2 years after अगर पूछता है इसी क्वेश्चन का तो ये क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखेंगे 2 years अगर आफ्टर आपसे कोई पूछता है तो आपका वैल्यू जो 10,000 है वो यहाँ हो जाएगा। और अब सॉरी 2 years आफ्टर के लिए है ये, एक्सट्रीमली सॉरी। 10,000 एंड बिफोर पूछता है, इसका मतलब क्या हो गया? आप देखें बिफोर का जो वैल्यू होगा वो होगा कि 10,000 अभी की वैल्यू है, उसके पहले $10,000 into 90 by 100 into 90 by 100, ये क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 and that is 90 into 90, 8,100। 2 साल के बाद 2 years after क्या हो जाएगा? 2 years after it will be 81,000, 2 years before it will be 12,300 approximately. So 12,300 यहाँ से घट के 2 सालों में 10,000 हुआ एंड फिर यहाँ से 2 सालों में घट के क्या हो गया? 8100।
and this is the case of depreciation. Did you get my point? Now what are the things that get depreciated? तो वैल्यू किस किस चीजों की कम होती है ओवर द टाइम? तो आप जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हो उसकी वैल्यू कम होती है। लेट्स से आज आपने एक 30,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, 2 साल के बाद उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी। यू कैन नॉट सेल इट ऑन द 30,000 प्राइस, बट व्हाट द वैल्यू अप्रिशिएट्स। सपोज आपने एक लैंड खरीदा, अ पीस ऑफ लैंड, इसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रिशिएट होती है। तो इसका अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि मान लीजिए एक बंदे ने पीस ऑफ लैंड खरीदा 10,000 रुपए का, और वो हर साल जो है सो 20% से अप्रिशिएट हो रही है। एवरी ईयर 20% से अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 साल बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बढ़ रही है मींस 120, 100 रुपए की चीज 120 में हो रही है, यानी 120 बाई 100, 1 2 1 2 1 2 और इधर 1 2 कैंसल। 12 square you know is 144, and then we have 100, that is 00। तो 10,000 रुपए की चीज आपका क्या हो जाएगा? 14,400 rupees। Is it clear, guys? Is it clear, everyone? Now, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके जो परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे वो लगभग ऐसे ही होंगे। ध्यान से देखिए, एक है एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में आपको कुछ चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप जानते हो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, isn't it? ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो प्राइस जिसपे आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हो। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच यू sell a product or a service. Now, this is what? So this is not your blood pressure, it is your base price. It is your base price. Another name of cost price. Cost price का दूसरा नाम। अब क्वेश्चन क्या कह देगा आपसे कि the price of a product, the base price of a product is ₹100। तो इसका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि वो आपको एक छोटा सा धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि द प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ना कह के आपको कहेगा बेस प्राइस। द बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹100। ये चीजें आप ध्यान देंगे हमेशा। बेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है। ओके, नाउ यहाँ पे सिनेरियोज होंगे। सिनेरियोज क्या होंगे? अगर कॉस्ट प्राइस आपका ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, यानी 100 रुपए में आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और 80 रुपए में बेचा, तो यहाँ आपको क्या होगा? आपको होगा लॉस। कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर आपका कॉस्ट प्राइस लेस हुआ किससे? सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होगा? आपको होगा प्रॉफिट। Isn't it, guys? So cost price अगर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है तो लॉस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस है नो प्रॉफिट नो लॉस, और कॉस्ट प्राइस
लेस देन सेलिंग प्राइस है, देन वी हैव अ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? नाउ प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे हमेशा कहेगा कि जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो आप प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालो, प्रॉफिट या फिर आप लॉस परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों का फॉर्मूला सेम है। इफ यू आर हैविंग a profit, here it will be profit. If you are having a loss, here it will be a loss. And profit and loss is always calculated on cost price multiplied by 100. So अगर आप प्रॉफिट आपने कमाया है तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर आपको लॉस हुई है तो लॉस परसेंटेज विल बी लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और कॉस्ट प्राइस यहाँ आपके बेस में होता है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस का अनदर नेम क्या है आपका है बेस प्राइस। इज इट क्लियर? कॉस्ट प्राइस का अनदर नेम क्या है? कॉस्ट प्राइस का अनदर नेम है बेस प्राइस। ओके, नाउ प्लीज ध्यान से देखें कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। हम पहले इतने चीजों का देखते हैं। मान लीजिए सिनेरियो कि कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का 100 है और प्रॉफिट परसेंट 20% है। सेलिंग प्राइस क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा? ध्यान से देखें, इस तरह का कैलकुलेशन बहुत ही इजी होता है। अगर 100 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस है और आपने 20% प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब 120% 120% ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 120 आपका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट आपकी क्या हो जाती है? 20 रुपीज। वेरी इजी टू सॉल्व। लेकिन इसी चीज को आप इस तरह देखें, मान लीजिए कि 150 आपकी सेलिंग प्राइस है, आपका प्रॉफिट 20% है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? आपकी कॉस्ट प्राइस क्या? क्लियर? तो दिस 150 is 120% of your cost price. This 150 is 120% of your cost price. तो अगर यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए ये 100 होता तो ये क्या हो जाता है? ये 120 होता। लेकिन यहाँ पे तो 120 है नहीं, 150 है, तो यहाँ पे भी 100 ना हो के कुछ और होगा। कैसे मालूम करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 150 into 100 divided by 120। यहाँ 20 से 5, यहाँ 20 से 6, 3 से ये 2, 3 से ये 50 और 2 से ये 25। ये क्या हो जाएगा आपका? 125। क्या हो जाएगा आपका? 125। कॉस्ट प्राइस 125। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो 150 minus 25 एंड दैट इज 25 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। इज इट क्लियर? तो हमेशा याद रखें, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना जब प्रॉफिट होता रहता है या लॉस होता रहता है तो बहुत आसान होता है। लेकिन सेलिंग प्राइस से अगर आपको दी हुई है और आपको कॉस्ट प्राइस कह रहा है तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो अगर मैं देखूं तो लेट्स से
हमारी कॉस्ट प्राइस 150 है। हमें लॉस परसेंट हुआ है कितने का? लॉस परसेंट हुआ है, लेट्स अज्यूम 20% का। 20% का हमें लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? क्लियर? तो अगर ये 100 रुपए है तो ये 80%, इजंट इट? तो आप इसका 20% निकाल दो 150 का। 20% इज 30। आपको लॉस कितने हुआ? 30। यानी आपने बेचा कितने में? 120। क्लियर? ये आपका आसानी से समझ में आ जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन इसी चीज को अगर मैं उल्टा करूं कि मान लीजिए आपकी 150 सेलिंग प्राइस है और आपको लॉस हुआ है 20%, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, ये अगर 100 होता तो आपकी लॉस कितनी होती? लॉस होती 20% की, यानी 80 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस होता। जबकि यहाँ पे 80 तो है नहीं, यहाँ पे 150 है, तो ये भी क्या होगा? 100 नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड दैट इज 100 into 150 by 80, 4 times 5 times, यहाँ पे 2 times, and this is 75 times. So 75 into 5 is how much? It is 375 divided by 2, and 375 by 2 is how much? तो 187.5, 187.5, यानी 187.5 रुपीज की प्रोडक्ट आपने कितने में बेची? आपने बेची 150 में, और आपको यानी कि 37 रुपीज का, 37 रुपीज एंड 50 पैसे का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इज इट क्लियर गाइस? नाउ थोड़ा इसी का एक एक्सटेंशन देखें, एंड एक्सटेंशन क्या है कि वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लिस्ट प्राइस या फिर मार्कअप प्राइस। ना लिस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस क्या है, या इसी को एक और बोलता है, एंड दैट इज मार्क्ड प्राइस। व्हाट इज दिस? लिस्ट प्राइस, मार्कअप प्राइस या मार्क्ड प्राइस? इसको समझने के लिए आप इसको ऐसा समझे कि लेट्स अज्यूम कि एक बेईमान दुकानदार है। उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना। नाउ हाउ ही विल मैक्सिमाइज द रेवेन्यू? वो क्या करेगा? स्टिकर उखाड़ेगा, एक नया स्टिकर पुट करेगा। ओके, नाउ व्हाट ही हैज डन, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज सभी लोग। मान लीजिए कि 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है जो उसने खरीदा है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। वो अब क्या करता है, इसको बेचने का जो स्टिकर प्राइस यानी मार्क मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको कहते हैं, वो अगर मार्क्ड अप वहां पे है कि 110 में बेच दिया जाए, मीन्स कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज अगर हमने 110 रुपए में बेची तो वो इट इज कंसिडर्ड एज अ फेयर मार्जिन। क्योंकि आप फेयर मार्जिन की जब आप बात करते हैं तो हर चीजों में आपका मार्जिन अलग अलग होता है।
एग्जाम्पल के लिए, इफ इट इज FMCG प्रोडक्ट, वहां पे आपको मार्जिन कम होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तो मार्जिन हाई। लेकिन आई एम टेकिंग अ सिनेरियो, 100 रुपए की चीज आपको वो बिकनी चाहिए 110 रुपए में, यानी MRP आपका मार्क्ड होगा 110 रुपीज, 105 रुपीज। लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज, तो इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझें, मैंने या उस दुकानदार ने क्या किया है कि लालच में आके उसकी प्राइस को, उसकी लिस्ट प्राइस को या उसकी मार्कअप प्राइस को या मार्क्ड प्राइस को हटाया है और एक नया मार्कअप प्राइस लाया है, एंड दैट मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस इज 150 रुपीज। अभी उसने इस प्रोडक्ट को क्या किया, मार्कअप कर दिया। मार्कअप किया तो सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो केस 1, एक बंदा आया, वो यहाँ पे देखता है 150 रुपए का प्रोडक्ट है, 150 रुपए देता है और वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है। इस दुकानदार की जो आप प्रॉफिट कहें वो कितनी की हो गई, 50 रुपए की, और प्रॉफिट परसेंट कितनी हुई, वो भी 50%। ही इज हैप्पी। सिनेरियो 2, केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा, क्लियर, केस 2 में क्या हो जाएगा, लेट से एक बंदा आता है, वो देखता है 150, कहता है मैं थोड़े दो जगह पे और जाता हूँ, देख के आता हूँ ये प्रोडक्ट कितने की है वहां अवेलेबल। नाउ दिस शॉपकीपर नोज कि अगर ये बंदा एक बार गया तो ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू, वो एक मार्केटिंग गिमिक यूज करता है, दैट इज, सर आप मेरे पहले कस्टमर हो, आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। नाउ बंदा जो है सो 10% सुनता है, उसके दिमाग में बत्तियां चलने लगती हैं, बल्ब चलने लगते हैं उसके, और कहता है यार 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ले लो यहीं से, पता नहीं आगे वाला डिस्काउंट देगा या नहीं देगा। सो नाउ ही पेज हिम, कितना, तो इस 150 पे 15% का उसने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। सेलिंग प्राइस क्या हो गई उसकी, 135। क्लियर। अभी यहाँ पे इसकी प्रॉफिट क्या हो गई भाई, सिनेरियो 2 में, अगर सिनेरियो 2 में देखे तो हमारा 35 रुपए का प्रॉफिट हो। केस 3, केस 3 क्या हो जाएगा, लेट्स से ये बंदा अपने दोस्त को बोलता है, अरे उसने 10% डिस्काउंट दिया, तू भी जाके वहां से ले ले अगर तुझे चाहिए तो। ये बंदा पहले ही बांह चढ़ा के आता है, तुझे 10% दिया तो मैं तो उससे 20% लेके ही आऊंगा। नाउ नेगोशिएशंस हैपन, ये कहता है 150 रुपए का प्रोडक्ट है, तो कहता है हाँ 20% डिस्काउंट दो तो लेता हूँ, 20% नहीं 10% देता हूँ मैं सबको, सबको ना, मेरे को उसमें क्या फायदा, तो 10% का, वो कहता है 10% तो सबको दे रहे हो, तो मेरे को कस्टमर, मैं तुम्हारा पुराना कस्टमर हूँ, मेरे को 20% दो। एंड दीज काइंड ऑफ नेगोशिएशंस हैपन अगेन इफ ये प्रोडक्ट जो है सो उसका लास्ट असॉर्टमेंट होता है। लास्ट असॉर्टमेंट मींस बहुत कम पीसेस बचे हैं, तो वो क्या कहता है, चलो यार बहुत पैसे कमा लिए हैं, थोड़ा कम में भी बेच देते हैं। सीइंग हिट द कंडीशन ही ऑफर्स, चलो ठीक है 20% दिया, 20% दिया मीन्स 30 रुपीज का डिस्काउंट, यानी ये प्रोडक्ट अब 120 में बिका। कितने में बिका, 120 में। यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितनी हुई, 20। ध्यान से देखें,
अगर एक नॉर्मल सिचुएशन होता तो यहाँ पे 10 रुपए की प्रॉफिट होती, यहाँ पे भी 10 रुपए की प्रॉफिट होती, यहाँ पे भी 10 रुपए की प्रॉफिट होती। लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमाइज, है ना, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ज्यादा प्रॉफिट मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि इस केस में आप देखें, आपको एक ही चीज समझ में आती है और वो होता है कि डिस्काउंट्स आर always given on marked price या फिर लिस्ट प्राइस। यानी डिस्काउंट आपको उसी समय मिल रहा है जब प्रोडक्ट मार्कअप किया गया है या फिर उसकी लिस्ट प्राइस की गई है। इज इट क्लियर? सिनेरियो देखें, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट if by giving a discount of 20%, a shopkeeper still gains 20%. What is the marked price of a product if by giving a discount of 20%, a shopkeeper still gains 20%, and cost price of product is rupees। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और आपका क्या है? मार्केट प्राइस। ये आपका है। उसको प्रॉफिट कितनी चाहिए? उसको प्रॉफिट चाहिए 20% की, यानी 100 रुपए में उसको 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। दैट मीन्स ही विल सेल इट फॉर 120। 120 रुपए में वो क्या करेगा? बेच डालेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट 120 रुपए में बेचा, लेकिन मार्क्ड प्राइस कितना रखेगा? तो मार्क्ड प्राइस पे आप देखें, उसने डिस्काउंट कितना दिया है? अगेन 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। तो ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपए होता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता 80 रुपए, तभी ना 20% का डिस्काउंट होता। लेकिन ये तो 80 नहीं है, ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड दैट इज 120 into 100 डिवाइडेड बाय 80। 40 से ये 3 बार, 40 से ये 2 बार और 2 से ये 50 बार, 2 से ये 50 बार। तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस विल बी 50 into 3 and that is 150 rupees। 50 into 3 and that is 150 rupees।
Is it clear everyone? अगर किसी को ये क्लियर नहीं होता है तो प्लीज वापस से आप आए इस YouTube के चैनल पे, आप उसको वहां पे दोबारा पीछे जाइए और एक बार चेक कर लीजिएगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद। इज इट ओके गाइस? या लेट्स सी, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एंड डिस्काउंट के ऊपर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिस्काउंट सीरीज। व्हाट इज अ डिस्काउंट सीरीज? डिस्काउंट सीरीज मीन्स कि मान लीजिए एक बंदे ने, यानी शॉपकीपर, वो ऑफर कर रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है 20% का, लेकिन ये प्रोडक्ट बिक नहीं रही है उसकी, तो वो कहता है चलो एक और डिस्काउंट वो देगा 10%। अभी भी देख रहा है कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही है, वो कहता है कि चलो एक और डिस्काउंट देता है 5% का, अब ये प्रोडक्ट बिक जाती है। उसने कितना डिस्काउंट दिया? अगर ये 3 डिस्काउंट जो सीरीज में है उसको हटा के एक सिंगल डिस्काउंट देखा जाए तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ध्यान से देखें, डिस्काउंट सीरीज में नंबर ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं। हमें हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट या फिर सिंगल डिस्काउंट जिसको आप कहते हैं, सिंगल डिस्काउंट इसके बराबर का वो क्या होगा। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का है, पहले कितना डिस्काउंट दिया? 20% का, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। प्रोडक्ट अवेलेबल कितने में है? 80 रुपए में। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये अभी भी बिक नहीं रही है ये प्रोडक्ट। तो when the product is not selling, what he is forced to give another discount of 10%. वो 10% उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, 10%. So 10% of 80 is how much now? It is 8 rupees. So 8 rupees का फिर डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे कितना हो गया? 72. 80 minus 8 gives you 72. अब ये 72 पे भी ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही है। So what he offers is another discount of 5%. 10% होता है 7 rupees and 20 पैसा। 5% कितना हो जाएगा? Half of 7 rupees and 20 paisa. So half of 7 rupees and 20 paisa is how much? 3 rupees 60 paisa. 3 rupees and 60 paisa. Now 3 rupees and 60 paisa कितना हो जाएगा? आप देखें तो it will be 72 minus 3 is 69 और यहाँ पे 68.4. 72 minus 3 rupees 60 paisa. क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर कोई कहता है कि आप डिस्काउंट कितना दिए, आपने डिस्काउंट कितना दिया, तो हमने डिस्काउंट क्या दिया है? अगर आप थोड़ा गौर कीजिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 20 रुपए का दिया है, 8 रुपए का दिया है और 3 रुपए 60 पैसे का दिया है। यानी टोटल डिस्काउंट कितना दिया है हमने? 31 रुपए एंड 60 पैसे का on 100, and that is equivalent to 31.6%. 31.6%.
6%. इज इट क्लियर गाइस? इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। आप यहाँ पे क्या करते कि आप 100 रुपए की चीज आप 68 रुपीज एंड 40 पैसा में, दैट इज 100 माइनस 68.4, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31.6 रुपीज का डिस्काउंट। 31.6 रुपीज का डिस्काउंट कहने का मतलब है 31.6 रुपीज का डिस्काउंट कहने का मतलब है कि इट इज 31.6%. Is it clear guys? Let's move over to a new question. Let's move over to a new question. चलिए, मान लीजिए कहता है the gain triples when the selling price of a product is doubled. कह रहा है find the gain percent. Okay, the gain triples when the selling price of a product is doubled, so find the gain percent. अब यहाँ पे देखिए आपको ना ही कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपसे कह रहा है कि भाई गेन ट्रिपल हो जा रहा है। क्लियर? गेन आपका ट्रिपल हो जा रहा है जब सेलिंग प्राइस आपकी डबल हो रही है। मैं मान लेता हूं यहाँ पे व्हाट आई विल डू, मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस क्या है वाई। ओके, और प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या होगा मेरा y माइनस एक्स। इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार मेरी ये कंडीशन होगी, कॉस्ट प्राइस अगर x है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा y, प्रॉफिट क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस तो सेम रह रहा है, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है डबल यानी 2y, प्रॉफिट क्या होगा 2y माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे कह रहा है द गेन ट्रिपल्स, पहले जो गेन हो रहा था उसका ट्रिपल यहाँ हो रहा है, मींस इक्वल करने के लिए क्या करना होगा आपको, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3y 3 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। इस 3x को इधर भेजिए, इस 2y को इधर भेजिए, 3y माइनस 2y यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स यानी 2x। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता चला कि y इज इक्वल टू 2x, यानी ये क्या हो गया, अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका हो गया 2x और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 4x। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट जो हो गया वो 2x माइनस एक्स यानी x हुआ, और यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ 4x माइनस एक्स यानी कि 3x। तो देखिए
इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपका जो गेन हो रहा था वो इस केस में क्या हो रहा था, आपने एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट लिया और एक्स ही रुपीज का आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इसको आप ऐसे समझिए 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको 100 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो कितना हो रहा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है, isn't it? तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा समझने के लिए। इज इट क्लियर गाइस? हेलो एवरीवन। चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि 12 products were sold at cost price of 15 products. कहता है find the profit percent। 12 प्रोडक्ट के प्राइस पे, है ना, कितने पे हो रहा है, सेलिंग हो रही है, तो इस पे कॉस्ट प्राइस 15 प्रोडक्ट्स के बराबर पैसे मिल रहे हैं मुझे। मैं मान लेता हूं क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ₹1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 प्रोडक्ट्स क्या होगा, इज इक्वल टू ₹12। लेकिन कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 प्रोडक्ट्स क्या होगा, हो जाएगा ₹50। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 प्रोडक्ट्स 12 है, लेकिन कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 12 प्रोडक्ट्स कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 प्रोडक्ट्स ये ₹15 है। तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 12, सेलिंग प्राइस 15, प्रॉफिट कितनी हुई, ₹3 की, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ₹12 की। So 3/12 is how much? 1/4. Isn't it? 3/12 is how much? 3/12 is 1/4, and 1/4 means 25%. 1/4 means 25%. तो ये क्वेश्चन अगर आप सिस्टमेटिकली सिर्फ सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इवन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप एक बार सिस्टमेटिक ढंग से इसको सोचो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट क्या होगा, ₹1। तो 12 प्रोडक्ट खरीदेंगे कितने में, ₹12 में। तो 12 प्रोडक्ट बेच कितने में रहा है, ₹15 की प्राइस पे, यानी ₹15 में। तो ₹12 में खरीदा और ₹15 में बेचा, यानी ₹3 उसकी क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। जब ₹3 प्रॉफिट हो गई तो इन्वेस्टमेंट उसने कितना लगाया, इन्वेस्टमेंट तो ₹12 लगाया। तो 3/12 दैट इज 1/4 and that is 25%. Is it clear? Can I clear the screen, everyone? Okay. Okay. चलिए ध्यान दीजिएगा प्लीज।
इसमें क्वेश्चन के इस तरह से आएगा कि a man buys a scooter for rupees 20,000. He spends 1,000 rupees on repair, 500 rupees on paint job. What should be his selling price in order to gain 20%? What should be his selling price in order to gain 20%? ध्यान से देखिए, स्कूटर को कितने में खरीदा? 20,000 में। रिपेयर किया 1,000 का, और 500 रुपए उसने पेंट जॉब पे खर्च किया। तो ये जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब जो है मेरे कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। 20,000 प्लस 1,000 एंड प्लस 500, दैट इज उसका टोटल कॉस्ट इनकर्ड ओवर स्कूटर इज 21,500 रुपए। उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट मीन्स 100 रुपए होता तो 120 में बेचता। 120% मीन्स हाउ मच? 120/100. So this is your 20 से 6 times, 20 से 5 times, 5 से 5 4 जा 20, 115, 5 3 जा 15 and we have 00. तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 00, 6 3 जा 18, carry forward is 1, 6 4 जा 24 and 125, यानी 25,800 रुपए, 25,800 रुपीज इसमें ये प्रोडक्ट बेचेगा और इसको एक अच्छी 20% की गेन मिल जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? चलिए, लेट्स अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। A shopkeeper offers a discount of 10% on the bag, but
but sells the bag at a gain of 25%. What is his profit percent after offering discount? After offering discount. ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना आपका कॉस्ट प्राइस दे रहा है और ना ही आपका कुछ सेलिंग प्राइस दे रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो आप डिस्काउंट दे रहा है 10% का। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट घटेगा, तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैं मान लूंगा कि कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 होता तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। 100 रुपए का 25% 25 रुपए होता है। सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 125। लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, अब इस सेलिंग प्राइस पे वो क्या कर रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 12.5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस न्यू कितना हो गया? 125 माइनस 12 रुपए 25 पैसा, दैट इज 112 रुपए 25 पैसा, 50 पैसा। And 112 rupees and 50 paisa means how much profit? A profit of 12.5 over 100, and that is equal to 12.5%. 12.5%. Is it okay, guys? Is it okay? Yes. एक लास्ट थोड़ा सा थ्योरी देखिएगा, and that is case of using a false weight. Case of using a false weight. अब केस ऑफ यूजिंग अ फॉल्स वेट कहने का मतलब क्या है? तो भाई आप इसको ऐसे समझे कि एक दुकानदार जो है वो सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि भाई जिस भाव में मैं खरीदता हूं उसी भाव में मैं आपको बेच भी रहा हूं। सो अगर मैं 100 रुपए केजी कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं तो मैं आपको बेच भी रहा हूं 100 रुपए केजी। मैं कुछ भी अपने लिए कमा नहीं रहा हूं। आई एम नॉट अर्निंग एनी पेनी फ्रॉम दैट। But what he does is actually he uses a false weight to give you the product. यानी अगर वो 100 रुपए केजी का खरीद रहा है तो आपको बेच 100 रुपए किलो में ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? आपको 100 रुपए में 1 किलो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो आपको 100 रुपए में 1 किलो से थोड़ा कम दे रहा है। यानी इस तरह से वो वजन में चोरी कर रहा है। तो वजन में चोरी कर रहा है मीन्स उसको कम प्रोडक्ट दे रहा है। तो कम प्रोडक्ट देने का सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि वो इस तरीके से प्रॉफिट अपना कमा रहा है। इस चीज को हम लोग कैसे देखेंगे? हाउ वी विल सी दिस? ओके, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस चीज को मान लीजिए
कि 100 रुपए में उसने 1000 ग्राम्स खरीदा है, लेकिन वो बेच रहा है 100 रुपए में कितना? लेट्स अज्यूम वो 800 ग्राम्स बेच रहा है। मीन्स वो चीट कितने से कर रहा है? तो चीटिंग कितने की कर रहा है? तो चीटिंग ऑफ 200 grams. How much is he cheating? He is cheating of 200 grams. यहाँ पे आप सीधे सीधे आप ये कर सकते हो कि उसने 200 ग्राम की चोरी की और दिया कितना? 800 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? 1/4, यानी उसकी प्रॉफिट कितनी हुई? उसकी प्रॉफिट जो हुई वो हो गई 25%। प्रॉफिट कितनी हो गई? 25%। Is it clear? Is it clear, guys? जिनको थोड़ा ऐसा समझने में तकलीफ हो रही है वो क्या करें, एक फॉर्मूला लिख लें, एंड दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अब हम ये तो नहीं लिख सकते कि चीटिंग कर रहा है वो, तो हम लिखेंगे उसने एरर किया, गलती करी, एरर कमिटेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये आपका काम कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको फिर से इसी चीज पे देख लेते हैं हम लोग। एरर कितने का किया? 200 ग्राम का। ट्रू वैल्यू कितना? 1000। एरर कितना? अगेन 200 इंटू 100%। यहाँ क्या हो जाएगा? 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800। 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800। 200 से ये 4 बार और 4 से ये 25। प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 25%, जो आपका यहाँ पे भी हो रहा था। डिड यू गेट माई पॉइंट? इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। लेट्स मूव टू सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। प्लीज देखिएगा। A man sells an article. A man sells an article at a profit of 20%. A man sells an article at a profit of 20%. If he had bought it 20% less,
but sold it at same price what would have been his profit percent? What would have been his profit percent? ध्यान से देखिए, a man sells an article at a profit of 20%. सबसे पहले आप क्या करें, कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लें 100 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो जाती 120। यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट 20% यानी कि प्रॉफिट क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता 20 रुपए। लेकिन कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, यानी यहां से उसने 20% लेस में खरीदा होता, यानी 80 रुपए में खरीदा होता और सेलिंग प्राइस उसकी सेम होती, तो प्रॉफिट यहाँ क्या हो जाता 40 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता, तो प्रॉफिट परसेंट होता 40 बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यहां से ये 2 टाइम्स और ये 2 से ये 50 टाइम्स, उसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी हो जाती 50%। इज इट क्लियर गाइस, इसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी हो जाती 50%। चलिए ध्यान से देखिएगा, a seller bought 10 pencils for ₹8 and sold 8 pencils for ₹10. Find his gain percent. Find his gain percent. इस तरह का क्वेश्चन आप देखें तो 10 पेंसिल खरीदा 8 रुपए में और 8 पेंसिल बेच रहा है 10 रुपए में। क्लियर? अब ध्यान से देखें, इसमें आप कर सकते हो कि 10 पेंसिल अगर 8 रुपए में खरीदा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल 80 पैसे में खरीदा और एक पेंसिल बेचा कितने में, तो एक पेंसिल वो बेचा 10/8 that is 5/4 that is ₹1 25 पैसे। Isn't it? इसकी प्रॉफिट कितनी हो गई, इसकी प्रॉफिट हो गई 45 पैसा की। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 80 पैसा का, यानी इनटू 100। अब यहाँ पे देखें ये आपका कैंसल्ड, 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 4 बार में, 45 गुणिले 5 ये हो जाता है आपका 45 गुणिले 5 225
बाई 4 एंड दैट इज 4 पचे 20, 2 25, 4 छके 24, यानी 56.25% का उसको प्रॉफिट हुआ। 56.25% का इसको प्रॉफिट हुआ। अब इसी चीज को आप एक शॉर्टकट इसको देखें, एंड दैट इज सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। ध्यान दीजिएगा, 10 पेंसिल्स खरीदे 8 रुपए में और 8 पेंसिल्स बेच रहा है 10 रुपए में। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 और यहाँ, अब आप मान लीजिए कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। 64 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, यानी 36 रुपए की प्रॉफिट हुई ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 64 into 100। यहाँ 4 से ये 16, 4 से ये 25, 4 से ये 4, 4 से ये 9, यानी अगेन आपका ये देखें तो 25 9 225 बाई 4, यानी आपका यही हो जाएगा कितना, 56 रुपीज, 56.25%। Is it clear everyone? Hello? Again I am repeating the same thing. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज लाइव सेशन के बाद उसको जब भी आप खोलें उसको रिवाइंड कर लें, एक बार फिर से देखें। जब आप बार बार किसी चीज को देखोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आने लगेगी। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज a shopkeeper sold 15 pence for rupees 120. The loss incurred by him was equal to cost price of 3 pence. Find the cost price of 1 pen. Find the cost price of 1 pen. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ध्यान से देखिए। 15 पेंस कितने का बेच रहा है, 120 रुपए का, और उसको लॉस कितने की हो रही है, 3 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर की। मान लीजिए कि उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन ये x हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन कितना हो जाएगा, 15x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। अब 15x कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 120 है, तो लॉस कितना हो रहा है, 3x का। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, यानी आप कह सकते हो 12x इज इक्वल टू 120, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच,
10. Cost price of a pen is 10 rupees. What is the cost price of a pen? And that is 10 rupees. Is it clear, guys? Now, with this, can I say you have gained beautiful information from this? And what I can say is, so what I can say is, if you have any problem, आप comments में लिखो. And once again, we will continue tomorrow at 10 a.m. So please do join us for new questions and a new chapter. Thank you. Let's end the session.